वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज मैं आप लोगों को किरचॉफ लॉ के बारे में बताता हूँ। और किरचॉफ लॉ कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स सेल इंटरकनेक्टेड समटाइम्स इन कॉम्प्लिकेटेड वे। ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट जो होता है वो उसमें जनरली जो है नंबर ऑफ रेसिस्टर होते हैं, लगे होते हैं, और जो सेल जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड वे में रहता है। ठीक है। द फार्मूली वी हैव डिराइव्ड अर्लियर फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सीरीज और पैरेलल होता है। ऑफ रेसिस्टर्स आर नॉट ऑलवेज एफिशिएंट टू डिटरमाइन ऑल द करेंट। कह रहे हैं कि दोनों जो हम लोगों ने फिर फार्मूला पढ़ा है वो हमेशा एफिशिएंट नहीं होता। ओके, डिटरमाइन करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा है। एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द सर्किट। सो two rules called Kirchhoff rules are very useful for analysis of electric circuit। किरचॉफ के दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ओके, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। गिवन अ सर्किट वी स्टार्ट बाय द लेबलिंग करंट इन ईच रेसिस्टर फॉर अ सिंबल से आई। मतलब कह रहा है कि हम लोग सर्किट को लेबल करेंगे और इसका आई नाम देंगे। एंड डायरेक्टेड एरो टू द इंडिकेटेड दैट अ करंट आई फ्लोज। और इसमें डायरेक्ट एरो करके दिखाएंगे कि आई जो है से जो करंट फ्लो हो रही है उसको आई बोलेंगे। along द रेसिस्टर इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। रेसिस्टर जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इफ़ अल्टीमेटली आई इज डिटरमाइंड टू बी पॉजिटिव, जबकि आई जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। बी एक्चुअल करंट इन द रेसिस्टर, जो कि करंट में एक्चुअल रेसिस्टर होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एरो के डायरेक्शन में। इफ़ आई टर्न आउट द नेगेटिव, ओके, द करंट एक्चुअली फ्लो इन डायरेक्शन पॉजिटिव टू एरो। ठीक है। सिमिलरली फॉर ईच सोर्स दैट सेल और सम अदर source of the electrical power, the positive and negative electrodes are labeled, is it? As well as a directed arrow with the symbol for the current flowing through the cell. This will tell us the potential difference. Okay, V is equal to V, P minus B n is equal to epsilon minus IR. Epsilon minus IR. Okay, we have seen in equation 3.838. Okay, the positive terminal P and the negative terminal N. I here the current following N and the P through the cell. While labeling the current I through the cell, one goes from P to N. Then of course potential difference equal to epsilon plus IR. Epsilon plus IR. Having clarified labeling, now state the rules and the proof. Okay. The first one is junction rule. At any junction, the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction. This implies equally well if instead of junction of the several lines we consider a point in a line. The proof of this rule follows from the fact that the then current are steady. There is no accumulation of charge at any junction or at any point in a line. Thus the total current flow in, which is the rate at which a charge flow into the junction, must equal to the total current flow out. Okay, in the continuation, loop rule. The algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. Is it? So this rule is also obvious since electric potential is dependent on the location of a point. Thus starting with any point
we come back to the same point. The total change must be 0. In a closed loop, we do come back to the starting point and hence the rule. Is it? It should be noted that because of the symmetry of the network, the great power of the Kirchhoff's rule has not been very apparent in example given. Okay, there will be no such simplification due to the symmetry, and only the application of the Kirchhoff's rule will be junctions and closed loops as many as necessary to solve to the unknown and the network. Is it?